Good evening to all learners. Good So evening, sir. that Good evening, sir. good evening. So that the agrarian movement of this unit contains the agrarian movement, କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ, agrarian system and agrarian classes and their movement. How we develop the agricultural sectors, the farmer sectors, because India is a country of predominance on agriculture, so that the country belongs to villages, that about 70% people are farmers dependent on agriculture, as we came to know that the Indian agriculture or farming system is not so modernized so far today. So that is why the government of India and giving focus on the agrarian classes, how to develop, modernize the agricultural sectors and application of the modern technology in agricultural sectors. And for these reasons, what are the reasons why the government giving priority or importance on the agrarian sectors or agrarian classes in India? As because due to population explosion, we always faces the food problems. So additional mouth that's added in our country. That is why the country government given priority to increase the agricultural productivity. So that productivity will increase automatically if we apply the modern technology, pesticides, manures, fertilizers, and like power tiller, tractors, etc. So land redistribution also focuses in this context. Land, the surplus land, Jamindar, Mahalwar, Rautar, it must be abolished, so that the land possessed by the landlords, we should develop and redistribute, collect the surplus land and redistribute among the actual farmers. Hence, the Indian agrarian system and agrarian classes, we should give in priority. Agrarian movement do not take place in industrial sectors or urban settings, though they may draw support from sections of population in these sectors or may even have alliance with them from for achieving a larger political goals also. So that is why basically these movements arise within agrarian system. The meaning word agrarian stated that briefly is that pertaining to cultivate or agricultural land and its tenure. So ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଷ ଜମି ଅଛି, ସେଇମାନଙ୍କ କଥା এই agrarian system ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା. That is related to cultivated land and its management or distribution. How properly the surplus land will be distributed among the actual farmers. ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଚାଷୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଷ ଜମି କିଭଳି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରପରଲି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ଅଟୋମେଟିକାଲି the productivity of the agricultural farmland will increase. We can ignore the food crisis from our country. So ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷୀ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଷ ଜମି ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, କୋଉମାନେ ସେମାନେ landless laborers, landless farmers, the village artisans also, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଷ ଜମି ନାହିଁ. ପ୍ରକୃତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚାଷ ଜମି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଜମିନଦାର ମାହଲୱାର ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ରଖାଯାଇଥିଲା. ସେ ଜମିମାନେ ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ରଖିଥିଲେ. ସୋ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସରପ୍ଲସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା ଏବଂ ସିଲିଂ ଅନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ, ଗୋଟେ ସିଲିଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଗଲା
केते पर्यंत जने रखि परिबो the surplus land will handed over to the government. Government will immediately redistribute the surplus land among the farmers, agricultural farmers. Hence, the term agrarianism refers to movement for the division of land and changes which would improve the economic status of the farmers. अर्थनैतिक status किभଳି increase करिबा develop करिबा farmer मानकर and that land ownership and the farmers methods more or less controlled to bring about changes in the existing pattern of land ownership and operations that involve not only the diffusion of wealth, income, and productivity capacity in the economic, but also the creation of new incentives and motivation given to the farmers. New opportunity and motivation will create the desire to work and willingness to work when income production will increase the farmers, so they will forward and they will excited to perform better work activities in agricultural land. So agrarian outrage is an act of violence originating in discourse between classes with the relationship among the different relationship of the people. So agrarian classes କୋଉ ଗୁଡ଼ିକ agrarian class ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଡେଭଲପ କରାଯାଇ ପାରିବ, that we can discuss. The manner in which the members of an agrarian population are related to each other in the social organization of agricultural production describes a given agrarian systems and also determine the agrarian classes. These relationships includes attributes such as like crop share kariba given by a tenant to his landlords, unpaid laborers of the tenant, agricultural laborers, non-market wages, boundedness of laborers, customary exaction, rights over the women of inferior tenants and laborers. Various expressions were used for the landlords, symbolizing subordinate and a lower caste class status of the tenants. So ए समस्त पाई आमे गोटिए जे सरकार चिंता कले that are the different attributes we should allow to the farmers. Crop share किभଳି करा जिवो, so unpaid labor मानकू किभଳି ठीक भाबरे tenant agricultural laborers भाबरे तांकू कन्वर्ट करिबा, जो माने बिल्कुल काम धंदा पाउनांतिनी तांकू agricultural laborers भाबरे हमें कार्य रे लगाइबा. So agrarian classes in India, that is the penetration of market forces and adoption of technology are considered very important factors for shaping agrarian composition. That is adoption of technology, modern technology, power tiller, tractor, sowing machine, and HYV seeds, high yield of variety of seeds, and other pesticides, manures we should apply. That belongs to the modern technology system. We can, that is known as the intensive cultivation method, not extensive. Intensive cultivation, that we can cultivate in a particular piece of land throughout the year after year. So ବର୍ଷ तमाम आमे विभिन्न प्रकार फसल उत्पादन किभଳି करिबा, आमे सेही दृष्टिरू इरिगेशन फैसिलिटी मध्य गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करि थाए. कैनाल सिस्टम हो, डीप ट्यूबवेल हो, लिफ्ट इरिगेशन हो, बा ट्यूबवेल सिस्टम हो, pond system हो, we should provide sufficient irrigation facility to the farmers. For a large country like India, which has numerous complex combinations and the agrarian system, it is difficult to describe the various agrarian classes combinations, and hence with the influence of capitalistic changes began to take place in the agrarian field, these changes will help that land use varies from place to place and even
at one and the same place, depending upon the productivity of the region. Large because of the type of soil, availability of water adoption, of improved agricultural practice, development of communication, integration of market forces, political and administrative support, and setup must be given to the farmers. So एगुड़िक सब राजनीतिक सदिच्छा एवं प्रशासनिक सदिच्छा, they should motivate it to the farmers, agricultural farmers, by which we can develop the agrarian system in our country, by which we can produce more and more. For example, in Punjab, Haryana, and Uttar Pradesh, some part of the Uttar Pradesh, that huge abundant production of the wheat is held, and that surplus wheat is supplied to deficit areas, regions like Odisha, Andhra Pradesh, West Bengal, etc. जोड़ा प्रचुर परिमाण आधुनिक पद्धति जो चाषबास होउची एवं से सरप्लस फूड ग्रेन्स को विभिन्न डेफिसिट एरिया बा नियंत्रित अंचल को जोगाण करा जाउची। तापरे you can find out the topic movement arising out of feudalic contradiction, so in order to distribute equal distribution, how it is held possible? So land reforms is inevitable. सेथिपाई हमको land reform करिबा पय पड़िबो. So during the first 5-year plan 1951, when government plan strategy undertaken during 1951, by which a large numbers of and land distributed among the farmers, the surplus land collected and selling of land holding is held possible, and consolidation of holding is also applied. That is the strategical point of the government of our country. Since independence, the objective of land reforms after independence, तार उद्देश्य कौन थिला, सरकार का उद्देश्य कौन थिला, काहे कि लैंड रिफॉर्म एक्ट सब प्रणयन करथिले. सो लैंड रिफॉर्म पॉलिसी कहा ऊपर फोकस करूथिला, लाइक रिस्ट्रक्चर करबा agrarian relation to achieve an egalitarian social structure, गोटा फ्री सोशल इकोनॉमिक एंड स्ट्रक्चर रे परिणत करबा, गठन करबा सरकार का उद्देश्य थिला. So eliminating exploitation, शोषण in land reforms or land relations, जो जमींदार माने महलवार माने बहुल परिमाण रे चाष जमी को दखल कर रखिथिले, निज अख्तियार रखिथिले, ताकू सरप्लस लैंड कलेक्शन करागला एवं रिडिस्ट्रीब्यूट करागला, एलिमिनेशन करागला एक्सप्लॉइटेशन. ये एक प्रकार एक्सप्लॉइटेशन थिला, शोषण थिला चाषी को विरुद्ध रे. So realizing the age of old goal of land to the tiller, increasing agricultural production, infusing equality in society, एगुड़िक आमर लैंड रिफॉर्म करा जाइथिला. So the term land reform specifically refers to the land tenure reforms. The word tenure derived that one of the land tenure, T-N-U-R-E, that is one derived from the Latin word like teneo, T-N-E-O. Teneo means to hold. केते जने चाष जमी रखी परिबो. Therefore, land tenure is used to refer to the conditions under which land is held, or we may look at its an arrangement by which farmers hold and control the land, and the conditions that must be observed for its use and occupancy. Land is, that is,
expropriated and redistributed in order to maintain this system. এই সিস্টেম को ଆମେ maintain କରିବା properly ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀ ସୂତ୍ରରେ ଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ କୁ ହାତକୁ ନବା ପାଇଁ ପଡିଥାଏ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। So land reforms alter the power structure ମଧ୍ୟ land reform जोटा करा जाउची देशरे पावर को परिवर्तन करूची का पाखरे केते चाष जमी रहइबो। सो लैंड लॉर्ड मान कदरु भूमि मालिक कदरु जो मान जमींदार थे तांक कदरु उच्छेद करा जाउची। Structure both economic and political since land has always been a source of wealth, income, status and reflection of the interlocking class and caste structure of the Indian society. कारण भारत होची गोटे ग्राम बहुल राष्ट्र सेति पई आर 70 भागरु ऊर्ध्व लोक गाँ गंडा अंचल बसबास करिथांती जो माने कि चाष जमी उपरे निर्भर करी जीविका निर्वाह करिथांती। तेणु एगुडी कहले हमर कोन हबो लैंड रिफॉर्म जदि करा जिवो ताहले लोकंकर आय वृद्धि पाइबो, संबल वृद्धि पाइबो एवं लोकंकर अर्थनैतिक मानदंड सुदृढ़ होई परिबो। It empowers the actual tillers of the soil and enables to them to seek development benefits from the states. So apart from this, land reforms would also enable to more equitable distribution of land, which in turn will generate income on a more equitable basis. So thus land reform are seen as a way of not only increasing income employment of agricultural sector but also industrial sector will grow. Karan in agriculture and industry are both are coordinated. Without agricultural development we cannot flourish the industrial sector. Simultaneously the industrial growth also that flourish to agricultural sector or develop the agricultural sector. Agriculture produces raw materials supplied to the industry. Industry also produces the machine tools and the fertilizers and that is supplied to the agricultural sectors. So both are coordinated. कृषि एवं शिल्प उभय परस्पर जड़ित। कृषि रो विकास हेले शिल्प रो विकास होई थाए गोटे देश रे। तो देश रो विकास शिल्प रो विकास हेले देश रो मध्य चाषी मानकर विकास हेले समग्र देशर नेशनल इनकम वृद्धि होई थाए। तेणु उभय परस्पर अंगांगी भाव में जड़ित। आम एग्जांपल नहीं परिबा पंजाब हरियाणा गुजरात महाराष्ट्र जो माने तुम मानक भितर सब जाइथिबो केतबेले को काम रे बुली बेल देखिथिबो जे महाराष्ट्र एवं गुजरात पंजाब हरियाणा थ्रू आउट ईयर वर्ष तमाम इरिगेशन स्प्रिंकलिंग सिस्टम सिंचन प्रणाली पाइप माध्यम रे वर्ष तमाम सब जल जोगाई दे होछि चाष जमी सब बेले ग्रीनरी। So throughout year they are producing different goods and commodities. They are harvesting different goods and commodities. So the settlement system सेति पे हम देश रे प्रणयन करला सेटलमेंट परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम for assessing land revenue was first introduced by the British in Banaras. First introduced permanent settlement का पाखरे केते चाष जमी रहिबो केमती से माने रेवेन्यू देबे ब्रिटिश समय रे ड्यूरिंग 1773 बनारस सेटलमेंट करा जायथरा। सेही भली द बेंगल सेटलमेंट आल्सो परमानेंट सेटलमेंट रेगुलेशन बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रथमे बेंगल ले प्रणयन करथिले। से गुडी को रखी गिरी फोकस दृष्टि रे रखी गिरी भारत सरकार मध्ये सेटलमेंट सब करिसंती। चाष जमी का पाखरे केते रहि परिबो सेलिंग ऑन लैंड होल्डिंग केते रहि परिबो। सो जमींदारी सिस्टम आज रिजल्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट जोटा थिला जमींदार सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट हम देश रे वाज रजिस्टर्ड एंड चेंज्ड। ए जमींदार सिस्टम सब चेंज करा गला एट ए नंबर ऑफ प्लेसेस ओडिशा बिहार राजस्थान पंजाब हरियाणा मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश वेस्ट बेंगल सब आड़े प्राय रजिस्टर करा गला चेंज करा गला विभिन्न जगह रे। एज ए रिजल्ट the other variants that came up to different places were as
that like the Malguzari settlement what haithala, Malguzari settlement where village headmen were recognized as Malguzari. Villager je गाँ गंडार मुखिया से थिले मालगुजारी. ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଥିଲା ଜାଗିରିଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ. ଜାଗିରିଦାରୀରେ ଜମିଦାର did not have propriety. ଜମିଦାର ଏଥିରେ କିଛି ରୋଲ ନଥିଲା. Rights on the soil but enjoyed the rights to collect land revenue. ଜମିଦାର କଣ କରୁଥିଲା ଜାଗିରଦାରୀ ସିଷ୍ଟମରେ ତାର ରାଇଟ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ କରୁଥିଲା ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ डिपोजिट करूला ब्रिटिश सरकार मानक ताको एटा जागीरदारी सिस्टम. सो जागीरदारी सिस्टम रे दो the zamindar having no right on the land but indirectly they are exploiting to the people farmers in different places indirectly exploit करूले. सरकार कोन आसी देखुथिले कि के केमिति रेवेन्यू कलेक्शन करछन. तेणु ये जागीरदारी सिस्टम. आ गोटे थिला रौतारी सिस्टम वेयर बाय द गवर्नमेंट सेटल द रेंट्स डायरेक्टली. सरकार डायरेक्टली सेटलमेंट करूथिले रेंट सेटलमेंट करूथिले रौतारी सिस्टम रे. सो आ गोटे थिला महलवार सिस्टम बाय व्हिच द लैंड बिलोंग टू स्मॉल ग्रुप ऑफ फैमिली. छोटो छोटो फैमिली मानकू महलवार रे इंक्लूड करा जोथिला who were usually the most powerful in their region and were responsible for paying rent to the state. से ग्रुप छोटो छोटो गाँ परिवार से माने सब रेंट प्रदान करूथिले. ए सिस्टम रे सेतबळे सब जमींदार सिस्टम मालगुजार सिस्टम जागीरदारी सिस्टम रौतारी सिस्टम महलवार सिस्टम जेता ब्रिटिश सरकार समय प्रचलन होतला. सो approach to land reform system तापर धीरे धीरे land reform committee बसिला during 1949. The committee was in favor of abolishing feudal intermediaries. Even the intermediaries that existed below the zamindar and jagirdar were proposed to be got rid of. So they are abolished and the surplus land distributed. So 8th plan during 1992 पर्यंत landlessness is a root cause of rural poverty. देखा गला जो मानकर पाखरे आदौ चाष जमी नाही जो माने जी प्रकृत रे चासी लैंडलेस फार्मर्स लैंडलेस लेबरर्स जोथि पई आम देश रे दारिद्र्य संख्या percentage of poverty was increased. So during 1992 and 97 the plan set even objective of a land reform. Certain that several plan was implemented during 1992 to 1997 रे 92-97 जो पंचवार्षिक योजना थला विभिन्न ऑब्जेक्टिव दृष्टि रे रखी लैंड रिफॉर्म करा जाइथिला. सो जो पॉवर्टी एक्यूट पॉवर्टी बा एब्सोल्यूट पॉवर्टी मैक्सिमम लोग फार्मर्स माने दारिद्र्य सीमा रेखा तले बसवास करूथिले. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट सो वन क्वेश्चन अराइज दैट पॉवर्टी लाइन जो माने दारिद्र्य सीमा रेखा तले बसवास करूछंती सेमाना दारिद्र्य बोली आमे कहूछंती. सो दारिद्र्य सीमा रेखा उटा कोन ताले ताकू आमे the 5-year plan planning commission defined that what category people are belongs to poor. भारत योजना कमिशन बा योजना आयोग निर्धारण करथिले जे को माने प्रकृत रे हम देश रे दारिद्र्य बा दारिद्र्य सीमा रेखा तळे बसवास करूतंती. परहाप्स आमे लास्ट डे रे डिस्कशन करथिले that landless laborers क्वेश्चन जदि कोठ आसिला बा तुमके पचारिला ए मान होचन प्रकृत रे दारिद्र्य हिल ट्राइबल अंचल रे जो माने बारंबार फ्लड अफेक्ट होचंती बा ड्रॉट प्रोन एरिया एई अंचल गुडी कहूची दारिद्र्य. तेबे एई अंचल मानकरे को गोष्ठी लोक माने सब दारिद्र्य रे सीमा रेखा तळे रहउचंती लैंडलेस लेबरर्स
लैंडलेस फार्मर्स, आर्टिसान्स जो माने वीवर्स कलाकार बुणाकार भूमिहीन चाषी भूमिहीन श्रमिक यही माने प्रकृत रे दारिद्र्य आम देश These category of people are living below the poverty line. So what is question? What is poverty line? So 5-year plan and planning commission define given one beautiful definition about the poverty line. केमिति आमे दारिद्र्य जो लोक माने दारिद्र्य सीमा रेखा तले बसबास करछन हम केबोली जानिबा. So 21 आमे से दृष्टिरु लोक मानकु अर्बन एरिया एवं रूरल एरिया भाग दुई भाग विभक्तिकरण करा जायछि प्लानिंग कमिशन एक्ट अनुसार योजना आयोग नीति आयोग नियम अनुसार हमर अर्बन पीपुल एंड रूरल पीपुल. सो आमे कहबा केवल रूरल अंचल रे दारिद्र्य अछंती अर्बन अंचल नांती एटा भूल धारणा. नो डाउट रूरल अंचल रे मैक्सिमम अछंती अर्बन अंचल रे मध्य अछंती बड़ बड़ शहर मध्य गरीब लोक दारिद्र्य सीमा रेखा तले बसबास करूछंती. अच्छा से माने किभଳି तल निर्धारण करिवा दैट कैलोरी फूड इनटेक न्यूट्रियस फूड इनटेक हला विटामिन मिनरल्स को फोकस करिकरी हमर दारिद्र्य सीमा रेखा निर्धारण करा जायछि. फॉर एग्जांपल दैट प्लानिंग कमिशन डिफाइंड दैट if a person in a rural area per day they are unable to get 2100 in urban area हमें urban area कथा कहबा 2100 calorie per person per day if unable to get, so they are belongs to poverty line. And in rural area if a person per day unable to get 2400 calorie nutrition vitamin per day, they are belongs to poverty line, below the poverty line. तामाने सहरांचल रे जदि जने व्यक्ति ताको ओडिया रे हमें कहले बुझिबा सहरांचल रे दिनकू जने व्यक्ति जदि 2100 कैलोरी पुष्टिसार जातीय बा न्यूट्रिशन विटामिन जोटा आमे कहउचंती जदि न पाइबे से माने दारिद्र्य सीमा रेखा तले बसबास करूचंती. सहरांचल देखिथिबो बहुत प्रकार बस्ती सब थांती जरी पाल टांगी बा थाचड़ हाउस एई भलिया सब चाला घर इत्यादि निर्माण कर सहरर तळी अंचल रे बसबास करूथांती अर्बन एरिया तली अंचल मानकर सब. सो से माने कहबा से माने होचंती दारिद्र्य सीमा रेखा तले रहिसंती. त माने 2100 कैलोरी न्यूट्रिशन विटामिन पुष्टिसार जातीय खाद्य जदि न पाइले दैनिक जने व्यक्ति दिनक ताले से माने दारिद्र्य सीमा रेखा तले अछंती बोली आमे कहिबा. दिस कैटेगरी ऑफ पीपल आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, below not above. So गाँ गंडा अंचल रे ताले केते ना per person per day if unable to get 2400 calorie nutrition and vitamin, and this category of people are living below the poverty line. जदि गाँ गंडा अंचल रे 2400 कैलोरी न पाइले दिनकू जने व्यक्ति ताले से माने दारिद्र्य सीमा रेखा तले रहिछथि बोली हम कहबा. सामर कि बोली केते रेट रे पॉवर्टी अछि हम देश रे परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी कि बोली एया को निर्धारण करी पॉवर्टी रेशियो ता हमर बाहरी था देश रे. सो सहरांचल लोकन पई कम न्यूट्रिशन दरकार पड़ुछि गाँ गंडा लोकन पई अधिका न्यूट्रिशन विटामिन दरकार पड़ुछि. व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज़ द रूरल पीपल आर मोर रेबलियस देन द अर्बन पीपल. गाँ गंडा अंचल लोक माने अधिक परिश्रमी थिबारु सेमानक पई अधिक न्यूट्रिशन विटामिन जन व्यक्ति पई पर डे पर पर्सन दरकार पड़ी था. सो कैलोरी इनटेक न्यूट्रिशन एंड विटामिन को फोकस करिकरी दारिद्र्य सीमा रेखा निर्धारण करा जायछि. सो सहरांचल लोकन पई जन व्यक्ति
2100 कैलोरी पर डे न्यूट्रिशन दरकार पड़ुथिबो जदि सेतिकी न पाइला ताले दिस कैटेगरी ऑफ पीपल आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इन अर्बन एरिया सो सहरांचल रे ना सॉरी दैट इज ग्रामांचल रे रूरल अंचल रे जदि 2400 कैलोरी न पाइला ताले से लोक माने दारिद्र्य सीमा रेखा तले बसवास करछते बोली आमे कहिबा तो सेई माने दारिद्र्य ताले एई कैटेगरी लोक माने आमे जोटा आगुरु एग्जांपल देथिले साइट करथिले सेई कैटेगरी लोक माने ऑब्वियसली दे आर poorer sections in the society. So the objectives of the land reform, elimination, that is restructuring of agrarian reforms, relations to achieve egalitarian social structure. Egalitarian means the welfare structure. So secondly, elimination of exploitation in land reform. Exploitation शोषण land reform रे आमे exploitation को दूर करिबा. Next, actualization of the goal land to the tiller. प्रकृत रे गोल आमे रखिबा कथा प्रकृत रे जे चाष जमी बा चाषी माने तांका पाखरे चाष जमी पहुंचीबा दरकार. So improvement of the socio economic conditions of the rural poor. Next, objective the improvement करिबा socio economic structure of the rural poor. Next, increasing agricultural productivity and production and adopt the proper technological method to increase the productivity, increase agricultural productivity and production. Next, facilitating land-based development of the rural poor. गाँगंडा अंचल ग्रामांचल जो गरीब लोक मान अछंती ताकू फैसिलिटेट करबा कि भली माने अधिक चाष करि परिबे. So the reforms policy mostly emphasizes to detect बाहर करिबा खोजी करी बाहर करिबा and redistribute the selling surplus land. स्ट्रेटजी कोन थिला ताले लैंड रिफॉर्म रो जो लैंड रिफॉर्म करा गला तार स्ट्रेटजी कौशल गुडी को कोन थिला टू डिटेक्ट कहा पाखरे सरप्लस लैंड अछि ताकू बाहर करिबा खोजी करी अगेन and redistribute the selling of surplus land ताकू बंटन करिबा जो बळका चाष जमी रहिला ताकू प्रकृत चाषी मानक मध्यरे बंटन करिबा. Secondly, to enforce the selling laws strictly as the small and marginal farmers were viable in terms of efficiency and equity. प्रकृत रे जो मानकर efficiency अछि the marginal farmers सेमानक पाखरे चाष जमी कि भली जाय कि पहुंचा जिबे सरकार कर मुख्य उद्देश्य थिला लैंड रिफॉर्म एक्ट. So next, right to tenants and security of a tenant to be provided to them. तांको सिक्युरिटी दबा एवं तांकर भूमिर अधिकार को जाहिर करिबा सरकार कठोर आईन प्रणयन करिथिले. So leasing of land should be made permissible within the ceiling limit. लीज मध्य दबा सीलिंग लिमिट रे ओडा लीज दबा मध्य सरकार कर ए आईन रे थिला. The poor should be given access to wasteland and common property resources. जो माने गरीब लोक माने तांकु मध्य जोडा wasteland अछि हमर आबाद जमी बहुत परिमाण अछि तांकु सब गरीब लोक मान को दबा. सरकार जे भली जमी पट्टा वर्तमान सब प्रदान करचंती आदिवासी हरिजन लोक मान को हिल ट्राइबल अंचल रे जो मानकर बिल्कुल चाष जमी नाही तांकु वेस्टलैंड गुडी को आबाद जमी गुडी को तांकु पहाड़ तळी अंचल मानकर जमी पट्टा सब ओडिसा रे विभिन्न अंचल रे प्रदान करचंती वर्तमान सुधा. सो लैंड राइट्स ऑफ वुमेन मस्ट बी एन्श्योर्ड. महिला मानकर मध्य भूमिर अधिकार अछि ताकु मध्य एन्श्योर करिबा. सो नेक्स्ट, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग बी एक्सपेडाइटेड. कंसोलिडेशन करिबा लैंड होल्डिंग, इन्वॉल्वमेंट ऑफ विलेज पीपल and updation of land records was considered necessary. So national agricultural policy हमर गोटे प्रणयन होइतला नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी बा नाप पॉलिसी ड्यूरिंग 2000 मसिया मोडा नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी प्रणयन देश पई करा जाइतला. gave emphasis on some of the important issues to be accorded utmost attention for rural development of land reform.
जो पॉलिसी नाप पॉलिसी 2000 मसीह प्रणयन करागला से मुख्यतः लैंड रिफॉर्म उपरे केते गुडे इंपोर्टेंट पॉइंट ऊपर फोकस करथिले दैट इज वन कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग ऑल ओवर द कंट्री ऑन द पैटर्न ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट कंसोलिडेशन चकबंदीकरण करबा जोटा चकबंदीकरण करबा कारण चकबंदी रे बहुत बेनिफिट थाए गोटे निर्दिष्ट जमी को लोक मानक मध्य एक्सचेंज करबा सब्स्टिट्यूट करबा कारण गोटे लोकर एई जगह जनक जगह गोटे जगह चाष जमी थी पुणी जाकि डिस्टेंस जगह थी हाँ तापर आउ गोटे लोकर से भली गोटे जगह चाष जमी थी पुणी जाकि आउरी डिस्टेंस थी से लोकटी कौन करना एठी चाष जमी की जगुव फसल को जगुव पुणी सेठी भी जगुव जो प्रोब्लेम समस्या सृष्टि होची सेकेंडरी प्रोब्लेम कौन होची ना इरिगेशन प्रॉपर्ली हेई पारु नै गोटे चाष जमी जदि गोटे पाखरे थिबो आ गोटे चाष जमी अन्य पाखरे थिबो सो से पर्टिकुलर लोकटी किभली इरिगेशन करिवो इरिगेशन ता पई प्रॉब्लम होय सो कंसोलिडेशन होल्डिंग माध्यम रे हमर ओडिसा रे खोरदा अंचल रे कोस्टल अंचल रे कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग सरकार हाथ को नैथिले किंतु फेल्योर हे जाउची सेगडा सब जोडा सरकार स्टेप नउचंदी सेडा फेल्योर हे जाउची कंसोलिडेशन चकबंदी माध्यम रे कोन होउची ना सेठी सब गोटे प्याज रे सब्स्टिट्यूट करा दिबो गोटे चाष जमी को अदल बदल करा दिबो गोटे चक मध्य रे चाष जमीटी रहिबो गोटे लोकर सेठी रहिले ताकू जगीबा जगा रखा करबा पई सुविधा हबो इरिगेशन करबा पई सुविधा हबो एवं वर्ष तमाम विभिन्न प्रकार फसल करि पारे सो परस्पर मध्य रे जदि हम सब्स्टिट्यूट ऑफ लैंड होल्डिंग करा जाय सेकेंडली रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग सरप्लस लैंड एंड वेस्ट लैंड अमंग द लैंडलेस फार्मर्स अनएम्प्लॉयड youth together with some initial startup capital सरकार किछि प्रथमे स्टार्टअप कैपिटल जोगैगिरी पूंजी जोगैगिरी एगुड सब लैंडलेस फार्मर्स मानक मध्य रे सब बंटन करिथिले सो टेनेंसी रिफॉर्म्स टू रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ द टेनेंट्स एंड शेयर क्रॉपर्स recognition or recognition of women rights on land updating and improvement and computerization of land records issuing land passbook वर्तमान सब कंप्यूटराइज करा गलानी सब सही 2000 मसिया पॉलिसी अनुसार सरकार आमे सब नेट रे ऑनलाइन ने सब प्रकार जिनस पाई परिबा एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज जो माने मध्यस्थता चाष जमी थिले इंटरमीडिएरीज सेमान सब किभली एबोलिशन करबा को माने साल ताले इंटरमीडिएरीज किए थिले ना जमींदार माने सब थिले सो लेजिस्लेटर मेजर्स and legislative measures for the abolition of intermediate tenure started with Uttar Pradesh प्रथम उत्तर प्रदेश स्टार्ट हला जमींदार abolition लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 and 51 रे प्रथम प्रणयन करा गला जमींदारी abolition act of Uttar Pradesh it abolished all rights of जमींदार and जागीरदार सब गुडा को abolish करा गला abolition of intermediate tenure तो जो माने जमींदार थिले जो से माने रेंट कलेक्शन करथिले सरकार को जमीन माने ब्रिटिश सरकार को दउथिले तापर सरकार को दउथिले सरकार एगुडी को सब हमर देश स्वाधीन हासिल हला परे जेत पंचवार्षिक योजना स्ट्रेटजी प्लानिंग इंप्लीमेंट हला तापर एगुडी को सब सरकार धीरे धीरे उच्छेद कले वॉलंटरी मध्ये अनेक लोक सरेंडर करिसेंती voluntary surrender should be checked and register the revenue authorities and landlords should not be enabled to repossess पुनर्बार आउ जे भली तांका पाखर न रहइबो अधिक चाष जमी काम प्रति मध्ये सरकार ध्यान देथिले तो एई भली हिसाब रे विभिन्न प्रकार सरकार विभिन्न समय स्टेप नैचंती तो सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग रे हमर फेज 1 रे थिला revised sealing laws 1960 ru 72 तापर फेज 2 रे थिला 1972 रे सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग विभिन्न प्रकार सरकार से समय आईन मध्ये प्रणयन करथिले
अच्छा नेक्स्ट आधार तुमरा अछि गोटे ग्रीन रिवोल्यूशन सबुज विप्लव ग्रीन रिवोल्यूशन ड्यूरिंग 1960 plays one of the important role to increase the surplus food grains in our country सबुज विप्लव जदि न होई थांता हम देश रे ताले आउ जने कि रेजिस्ट्रेशन करिनी करि दियो टिके आउ जने कि लर्नर्स तुम भितर रहिलो ये रेजिस्ट्रेशन कर दियो प्लीज सो ग्रीन रिवोल्यूशन बड़ा इंपोर्टेंट रोल 1960 रे जो ग्रीन रिवोल्यूशन हमर स्टार्ट 1960 66 आड़ को जो सबुज विप्लव आरंभ होइथिला सारा भारत रे एहा कृषि क्षेत्र गोटा विराट आंदोलन सृष्टि होइथिला किंतु जानि थाओ जे सबुज विप्लव जो रिवोल्यूशन होइथिला ग्रीन रिवोल्यूशन आर इंपैक्ट पड़िला नहीं सारा भारत रे दैट ग्रीन रिवोल्यूशन the positive impact fall on the states particularly on Punjab, Haryana, Gujarat, some parts of the Uttar Pradesh and Maharashtra এই কেতোটি রাজ্য উপরে सबुज विप्लवर प्रभाव पड़ता विशेष कर पंजाब हरियाणा या उपरे ए दुईटा स्टेट रे सबुज विप्लवर सॉलिड प्रभाव इंपैक्ट पड़िथिला जहा फल सेटु हमर सरप्लस कौन हो सरप्लस व्हीट प्रोडक्शन हो सारा भारत रे जहा डेफिसिट अंचल को जोगान करा जाउछि सबुज विप्लव जोटा हम देश रे आंदोलन होइथिला सो एक्सप्लेन that this green revolution plays one of the important role for the country's agricultural productivity. So what is green revolution? सबुज विप्लव कहाँ कहबा that the application of the modern technology and application of the HYV seeds, HYV type of seeds. HYV means that is high yield variety of seeds. अधिक ओडिया रे कहले बुझबा अधिक अमलक्षम बिहन आमर जे भली ओडिशा रे एवं आंध्र प्रदेश रे अधिक अमलक्षम बिहन विभिन्न प्रकार कम दिन रे किभली प्रोडक्शन हबो एवं कम जल जोगान रे किभली अधिका प्रोडक्शन हबो खरा सीजन रे किभली धान चाष हबो ए सब ऊपर गुरुत्व दिया जाउछि एडा सब होछि HYV सीड्स हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स प्रचुर जलसेचन सुविधा जो अंचल नथिले से अंचल रे एभलिया आमे बिहन एप्लिकेशन करबा कृषि क्षेत्र रे जा फल रे प्रचुर प्रोडक्शन होई परिबो सो दैट द ग्रीन रिवोल्यूशन व्हिच बिगन ड्यूरिंग 1960 is the name given to the first systematic attempt to increase agricultural production, particularly that of food grains in India. सरकार आगो को देखिले चिंता कले जनसंख्या क्षिप्र भाव में वृद्धि पाउछि जनसंख्या वृद्धि पाइले खाद्य समस्या देखा जीवो खाद्य समस्या देखा देले आमे विदेश उपरे निर्भरशील हवा विदेश रु खाद्य शस्य आमदानी करिबा जहा फल रे भारत देशर जातीय आय संपूर्ण भाव में सरी जीवो बा कमी कमी जीवो तेणु सेति पई आम देश रे किभली सेल्फ सस्टेनेंस हेई परिबा खाद्य उपरे स्वावलंबनशील किभली हेई परिबा तेणु ग्रीन रिवोल्यूशन प्रथमे प्रचलन करिथिले इट इज बेस्ड ऑन बायोकेमिकल इनोवेशन दैट इंक्लूड हाई यील्ड वेराइटी सीड्स केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स एबे सब बाहरी पड़लानी विभिन्न प्रकार मॉडर्न टेक्नोलॉजी सोइंग मशीन पावर टिलर ट्रैक्टर विभिन्न कटिंग मशीन धान को किभली अमल करबा हार्वेस्टिंग करबा विभिन्न प्रकार मॉडर्न टेक्नोलॉजी सब बाहरलानी कारण इंडस्ट्री एवं कृषि क्षेत्र परस्पर जड़ित उभय परस्पर परिपूरक जहाँ प्रोडक्शन करूची इंडस्ट्री माध्यम रे जो टूल्स टेक्निकल टूल्स बाहरुची ताकू कृषि क्षेत्र रे हमें एप्लीकेशन करूचंती सो दैट इज व्हाई हमें आगुर कोन होतला प्रचुर परिमाण रे गहम अमेरिका ऑस्ट्रेलिया सब इंपोर्ट करा जाउतला जलपथ माध्यम रे कि वर्तमान आ होउनी से तथापि देयर इज क्राइसिस सो एन इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन द फॉर्म ऑफ न्यू HYV of crops a package of practice which consists of appropriate application of chemical fertilizers pesticides and irrigation facilities
which are necessary for the technology. An overall strategy which include governmental policy for the provision of subsidy on inputs, remunerative price for output and availability of credit, एगुड़ी सब आम ग्रीन रेवोल्यूशन रे गुरुत्व दिया जाइथिला. No doubt that one awareness I am creating here, that regarding the use and application of the modern pesticides and insecticides, वर्तमान आम माने सब जानिबा लर्नर्स माने गोटे कथा सचेतनता एठी सृष्टि करिबा जे आमे नो डाउट आमे व्यवहार करूचंती पेस्टिसाइड्स, केमिकल, डीडीटी, विभिन्न प्रकार इंसेक्टिसाइड्स वर्तमान खाद्य शस्य आमे प्रचुर परिमाण रे व्यवहार करूचंती. तार विपद आमे जीवन प्रति आमे फेस करूचंती. काहे कि ना जनसंख्या विस्फोरण रे होची मुख्य कारण. आगे सब कौन कंपोस्ट खत सार सब कंपोस्ट खत कंपोस्ट जातीय खत सब व्यवहार होतला बिल बाड़ी रे. किंतु वर्तमान कौन होची द एप्लीकेशन ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली कहले पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड मॉडर्न केमिकल फर्टिलाइजर्स, जहा फल रे प्रचुर प्रोडक्शन होची किंतु विभिन्न प्रकार रोग एवं हमर मनुष्यर भारतीय लोक मानकर रेजिस्टेंस पावर धीरे धीरे वीक हो जाउची. इनडायरेक्टली आमे केमिकल फर्टिलाइजर्स को कंज्यूम करूचंती. देखो एनवायरनमेंट की भली पॉल्यूशन होची. नो डाउट द गवर्नमेंट अप्लाइज दैट मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स, but we are facing different diseases, we are attacking by different diseases. वर्तमान घरे घरे लोक देखिबो गैस्ट्रिक पेशेंट, अल्सर, पेप्टिक कैंसर, डायबिटीज, ये सब विभिन्न प्रकार जावतीय रोग, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर घरे घरे देखिबा पई पाइबा. कहीं आगे तो नथिला. मु छोट बेले देखिछि ये सब मु सुने नथले. गैस्ट्रिक कौन, डायबिटीज कौन, ब्लड प्रेशर कौन, हार्ट प्रोब्लेम कौन, पेप्टिक अल्सर कौन, कैंसर कौन, छोट बेले हम सब देखु नथलु. कारण से समय रे प्रकृत रे नेचुरल वे रे सब प्रोडक्शन होतिला. बिल्कुल चाष जमी रे सारा विष किछि पडु नथिला. वर्तमान देख चाष जमी लोक संख्या वृद्धि रु हेतु आमे प्रचुर परिमाण रे खाद्य शस्य प्रोडक्शन करूचंती. आमे जा पर नकले अचल. तेणु आमको सारा विष कीटनाशक प्रयोग करबा पई पडुछि. देखिबो विभिन्न प्रकार वेजिटेबल्स मार्केट को आसुची पूरा सतेज ग्रीन, दिन मान देखिबो ग्रीनिश देखा जाउथिबो, कलरफुल देखा जाउथिबो. ये सब स्प्रे करा जाउछि विभिन्न प्रकार हार्मोन. गोटे छोट साइज नेचुरल प्रोडक्टिविटी को बड़ साइज करा जाउछि. सो जो गुडा के हम प्रयोग करछन चाष जमी रे धान खेत रे देखिबो वर्षा सीजन रे आम ओडिशा रे मध्य बिना सार विष कीटनाशक रे धान आ शस्य क्षेत्र फसल फलिबो नाही. देखिबो फसल अमल परे चाष जमी रे गोटा व्हाइट कोटेड पड़ी जाउछि. चासी वर्षा दिने बा खरीफ सीजन रे जो सार विष प्रयोग करके आसिला तापर फसल हला कोन होउछि ना किभली एनवायरनमेंट पॉल्यूशन होउछि. चासी मानकर गोड़ आंठू गंठी बिंधा मध्य सृष्टि होउछि. कारण जो सारा विष प्रयोग कले तार संस्पर्श रे आसिगिरी से माने मध्य रोगाक्रांत हेले. तापर जो सारा विष कीटनाशक प्रयोग कले जेतले वर्षा हैला वर्षा रे फ्लो होइगिरी नदी नाळ झरणा पुष्करणी रे से पानी गुडी को जेंगी मिसिला फल रे जल जीव गुडी को मृत्यु मुख रे पड़िले. विभिन्न प्रकार जल जीव आम वर्तमान माने सागर महासागर कुह नदी पुष्करिणी झरणा रे आउ सेते परिमाण विभिन्न प्रकार जल जीव आउ देखा जाउना मृत्यु मुख रे पड़िलेनी. ए गुडी को सब फ्लो होइकिरी लास्ट रे नदी नाळ पोखरी एवं सागर महासागर रे पडुछि. तो नदी ये सब पॉल्यूशन हो गलानी. जल पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन जो पे होछि जेतबे स्प्रे करा जाउछि विभिन्न प्रकार शस्य वेजिटेबल्स रे एयर पॉल्यूशन होउछि. पॉल्यूशन मध्य ता पई होउछि. ये सब हला पॉल्यूशन फैक्टर. पॉल्यूशन ता आउरी केते कोन पॉल्यूशन होउछि
तापर जो फसल है जो स्प्रे है देखिथिबो चाष जमी मानकर आर्थवर्म तांकर गोटा जाति प्रजाति थाए विभिन्न प्रकार बैक्टेरिया सब थांती चाष जमी मानकर जिया जिया आर्थवर्म जोटा आम कहूँ देखिबो चाषबास है समय माटीटा टिके भुरभुर भुरभुर होकर बाहरी थाए वर्तमान चाष जमी देख से स्पेसीस कुआडे भ्यानिश हो गले चाष जमी मानकर जिया तांकर वंश विभिन्न बैक्टेरिया सब जोड़ा थांती फसल को ग्रो करे थांती धर धान चाष हो गला धान चाष पर रबी फसल हम बिरी मुग मांडिया एवं तैलबीज से सब बैक्टेरिया जोगई थांती से फसल को से बैक्टेरिया वंश मध्य निपात हो गला बिना सार रे आ फसल अमल हो पार ना ये परिस्थिति है तामाने इनडायरेक्टली आम एगुड़िक खाऊ विष आम कंज्यूम करुचे जहाँ फल घरे घरे देखिबो डायबिटीज पेशेंट डायबिटीज वन्स हेले किडनी अफेक्ट हम विभिन्न प्रकार अफेक्ट शरीर पार्ट गुड़िक अफेक्ट हम रोगी मृत्यु मुखर पड़ुछन जहाँ देखिबो डायबिटीज माने तार आखि पावर नष्ट होउची तार किडनी प्रॉब्लम होउची तार विभिन्न प्रकार पेट रोग स्टार्ट होउची एवं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम देखा जाउची घरे घरे देखिबो ए सब समस्या निश्चित भाव तुम कहीं मना जी जन अच्छ बर्तमान लर्न करुच काउनसिलिंग पार्ट रे भाग नहीं क्या घरे माने डायबिटीज गैस्ट्रिक ना छोट छोट पिला मानकर मध्य हलानी केवल यही मॉडर्न जोटा हार्वेस्टिंग होउची तार माध्यम एटा को नकले मध्य खाद्य समस्या दूर कर परिबा नाही ये विपद गोटे तेणु वी आर अप्लाइंग the modern HYV seeds high yielding variety of seeds and application of the pesticides insecticides modern manures fertilizers etc so that the basic strategy of the green revolution कौन basic strategy कौशल थिला the government policy was now oriented towards changing the technical conditions of the production सरकार जो वैषयिक ज्ञान टेक्निकल प्रोडक्शन प्रोसेस कृषि मान को चाषी मान को ट्रेनिंग देकरी से गुडी सब प्रयोग करले किबळे एप्लीकेशन हबो द न्यू टेक्नोलॉजी कंसिस्टेड एसेंशियल ऑफ पैकेज ऑफ इनपुट्स the emphasis was primarily on increasing of output of food grains especially wheat and rice भारतीय लोक मानकर मुख्य खाद्य हला राइस एंड व्हीट धान चाष करबा हमर विभिन्न भारतीय लोक माने माने राइस ऊपर विशेष डिपेंड करी थांती तो व्हीट ऊपर मध्य विशेष डिपेंड कर थांती अदर क्रॉप्स सच एज सुगर कैन ऑयल सीड्स पल्सेस कोर्सेस सीरियल्स जूट एंड ए गुडी को सब कॉटन वेयर नॉट पार्ट ऑफ दिस पॉलिसी ये गुडी को सब नथिला ए जो हमर ग्रीन रिवोल्यूशन रे या गुडी को ऊपर सब गुरुत्व दे विशेष करे राइस एंड व्हीट प्रोडक्शन ऊपर तो ग्रीन रिवोल्यूशन सबुज विप्लव सारा भारत रे यार इंपैक्ट भलो पड़ी नथिला केवल पड़ीथिला जो 1960 स्टार्ट हला पंजाब हरियाणा सम पार्ट ऑफ दी उत्तर प्रदेश एंड गुजरात महाराष्ट्र किछ अंचल रे सबुज विप्लव रो प्रभाव पड़ला किंतु विशेष करी प्रभाव पड़ला पंजाब हरियाणा पर जोटी प्रचुर परिमाण रे व्हीट प्रोडक्शन होची सारा भारत को सप्लाई करूची एवं दैट ऑयल सीड्स वर प्रोड्यूस्ड स्पेसिफिकली आगे हमें देखिचंती सबुज खेत रबी फसल समय रे सोरिष सब चाष होतला ग्रीनरी माने हळदी वर्ण गोटे माने धरणी माने जे बड़ी धारण करला बेले देखा जाउतला तेणु वर्तमान आउ से सब कोठी सोरिष चाष होची वर्तमान जेति के होची राजस्थान रे किछि अंचल रे चाष होची जोटी चाष होची सारा भारत वर्ष को जो होची सम पार्ट्स ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स आल्सो फार्मिंग इज जो हमर मस्टर्ड ऑयल किंतु ताहा संपूर्ण नहे 130 कोटी लोक जहाँ पर डिपेंड करूचंती तेणु यही माध्यम जो गुड़ाक आम पल्यूशन हो जाउची बा आमे अपमिश्रण करूचंती द्वारा विभिन्न प्रकार मध्य रोग सृष्टि होउची सो न्यू strategy also focused on increasing marketed surplus of food grains through price support and procurement operations वास्तव प्राइस सपोर्ट देकरी सरकार मध्य ताकू परचेज करूचंती वर्तमान सरकार चाषी मानू उपयुक्त मूल्य रे
धान प्राइस देकर धान कलेक्शन करुचंती एवं व्हीट मध्य कलेक्शन करुचंती पंजाब हरियाणा अन्य राज्य मानकरे जा फल आमर इक्वाल डिस्ट्रीब्यूशन बा चाषी माने प्रकृत रे तांकर जेतिकी प्राप्य से पाउछंती विशेष करी HYV हाई यील्ड भेराइटी ऑफ सीड्स रो एप्लीकेशन प्रचुर परिमाण रे करा जाउछि उन्नत अधिक अमलक्षम बिहन the crucial element in the HYV package by high yield variety package were the seeds which were typically a hybrid design with a hybrid design to give much higher yield in response to the use of fertilizers जो HYV seeds ता प्रयोग करा जाउची हमर अधिक अमलक्षम बिहन ताकू आमे जदी फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करबा प्रचुर प्रोडक्शन हेता तेणु HYV सीड्स जोटा कहते हाई यील्ड भेराइटी ऑफ सीड्स जदि आम प्रयोग करवा सारा विष कीटनाशक प्रयोग फल आमर प्रचुर प्रोडक्शन होता है नॉर्मल शस्य को जदि स्विंग करवा ताले प्रोडक्शन हबनी आम जेते पकेबा सारा विष कीटनाशक प्रयोग कले हब नहीं सीड्स तार बिहनटा मध्य से भली हेतिबा दरकार जहा ए जो सारा विष कीटनाशक एप्लीकेशन पाइला परे प्रचुर अमल हेता है So HY package, the crucial element of HY package is water also. जल सेचन प्रचुर परिमाण दरकार पड़ी था So tomorrow I will again continue the class. So good night.